एमईडीसीचे अध्यक्ष आहेत आपल्याबरोबर अभि बोराटकर सर. यांना मी विनंती करते की त्यांनी स्वागत करून आपलं मनोगत व्यक्त करावं. So, a warm welcome and greetings from MEDC to my colleague and good friend, Mrs. Minal Mohadikar. She also has her organization called. So together, this today's interaction, and it's pleasure to welcome our guest panelist, Mr. Amit Vaikar, and Mr. Pradyumna Ingle. In Shanghai, and uh, uh, insight and understanding of India as well as China. And post-COVID, we have seen this has brought in a lot of changes. Now, after the initial shocks and when it is sunk in, now people they are looking forward to post-lockdown what? So various notions. I think at this time it is really good to understand, to have insights from people like you. Here there are a lot of curiosity about a couple of things, particularly this all started in China, but how well China has again bounced back to the business. China has managed to survive and how quickly they are on the business platform. It is predicted that the things won't change. There are certain businesses, at least for some time to come, which are going to take a big hit, particularly the tourism or my industry, what we say, events, conventions, because that is very near to me and Meenal both, because they're associated with the exhibition industry. Even this tourism, hospitality, these industries are going to take a big hit. Happen, some industry go on a back foot, but there is an opportunity for some industries, like e-commerce, isn't it? A hit, but grocery, that kind of stuff, has done better. So I think we have more such insights from you. What are those areas that we should have an opportunity? Or someone who has a better understanding of China. Curiosity in everything is because through MEDC and a lot of entrepreneurs are with us today. One, most of our businesses were dependent on China. Right. Still, a lot of business can be done in proper China because there are certain advantages, particularly the cost competitiveness, quick turnaround time, any new product, everything, you can quickly bring it to the market, There's so many advantages, so most of us know that. But recently, different sentiments here that's what we have been seeing in media, what even the government is trying to say, in this period also opportunities for India because there is we are expecting some exodus of other MNCs which are operating in China now and are looking to shift their bases from China to some other place. Because already Japan had announced a huge package to Japanese companies to shift their bases from China to some other countries. The competition within the states of India also. If there is an opportunity, each state can take invite those kind of companies. And certain is also vying for that or eyeing for that. And when it comes to Maharashtra, even MEDC will like to facilitate not only who are trying to ship from China, but any company who want to have a base here. Correct. The Chinese company wanted to set up a base in India.
that is most welcome, because right now the government feels that this is a good opportunity. They are creating additional industrial spaces. They are coming out with additional packages because of the disruption. Overall, a gloom in the industry is, our economy is predicted, because India's economic GDP rate may be near up to 1% or so, but even it remains that it will still be a positive at the end of the year. And different things, they are trying to give some packages, attracting new companies. Right. I think in all these things, there's interaction from you to understand as a reality how the Chinese company are putting there, how they put the turn around, what opportunity do you see for a country like India or states like Maharashtra? How can we work closely, and how can we help the entrepreneurs here to have a better collaborations and in a way to turn around them, and also to understand with your experience what are the sector where there will be opportunities in the coming time. I once again welcome you Thank you. and look forward to a very meaningful interaction. And I'm sure after we complete your part, we'll be taking some question answers also, which today we'll like to have. So once again, Thank you. welcome and please, Chetan. Thank you. थँक्यू रवीजी. आम्ही आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि एमईडीसीच्या व्हाईस प्रेसिडेंट मीनल मोहाडीकर यांना विनंती आहे की त्यांनी आजच्या पॅनलिस्टची ओळख करून द्यावी. मीनल मॅडम. येस. मला सांगायला खूप आनंद वाटतोय की आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठान ही 24 वर्ष जुनी ऑर्गनायझेशन आहे. वी आर हॅव्हिंग 18 सेंटर्स. वी आर देअर इन दुबई ऑल्सो. सो एखाद वेळेस या मीटिंग नंतर आमची चायनाला सुद्धा शाखा सुरू होऊ शकेल. अपर्णा वाईकर, अमित वाईकर आणि प्रद्युम्न तिघांचंही खूप खूप स्वागत. सांगते खूप बरं वाटतंय की मुळे MEDC is a mediator between all chamber of commerce and the government. त्यामुळे आमच्याकडे रवी बोराटकर अध्यक्ष MEDC आहेतच, परंतु आमचे पाच नंदकिशोर कागलीवाल आणि कमांडर दीपक नाईक हे पण जॉईन होणार आहेत. तर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संतोष मंडलेचाजी हे अध्यक्ष आहेत, ते पण आपल्या बरोबर आहेत. ललित गांधी जे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत ते पण आहेत. दीपक करंदीकर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे आपल्याकडे आलेले आहेत. उमेश दाशरथी जे CM म्हणजे मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आहे, त्याचे 5 प्रेसिडेंट आपल्या बरोबर आता आहेत. आणि मला सांगायला खूप आनंद वाटतोय की आताच मी जॉईन झालेलं बघितलं की गिरीशजी चितळे बंधू म्हणून जे एस्टॅब्लिश नाव इकडे आहे ते सुद्धा गिरीशजी आपल्या बरोबर हजर झालेले. त्यामुळे या सगळ्यांचं स्वागत. आणि त्याच्याबरोबर मला एक सांगायला खूप बरं वाटतंय की अपर्णा वाईकर या फ्रीलान्स जर्नलिस्ट आहेत. आणि नुसते फ्रीलान्स जर्नलिस्ट मोठ्या पेपरमध्ये लिहितात म्हणून नाही, तर आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आमच्या मॅगझिन मध्ये गेली 5 वर्ष अपर्णा शांघाय मधल्या उद्योगिनींबद्दल लिहिते. त्यामुळे आय एम प्राऊड दॅट अपर्णा इज देअर विथ मी टुडे. त्यामुळे अपर्णा आणि अमित हे दोघं जण 10 वर्ष शांघायमध्ये एस्टॅब्लिश आहेत. त्याच्या आधी ते दोघेही जण जर्मनीमध्ये होते. आणि सांगताना एक आनंद वाटतोय की ती स्वतः अपर्णा फ्रीलान्स जर्नलिस्ट आहेच, परंतु ती फ्रॅग्रन्स डेव्हलपमेंट मॅनेजर म्हणून काम करते. आणि त्या कंपनीचं पण खूप मोठं काम आहे. इंटरनॅशनल फ्लेवर्स अँड फ्रॅग्रन्सेस लिमिटेड या नावाची IFF नावाची कंपनी आहे. आणि तिथे अपर्णा काम करते. नंतर ज्याचा सोप्स आणि डिटर्जंटशी संबंध आहे अशा ठिकाणी पदावरती अपर्णा काम करते. अमितजींनी मी म्हणेन की अमित वाईकर यांना 2 वर्षापूर्वी प्रवासी भारतीय हा पुरस्कार मिळालेला होता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तर्फे. आणि त्यांचा तुम्ही बायोडेटा बघितला तर ते सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत एशिया पॅसिफिक रिजनचे डॉलर फूड्स अँड बेव्हरेजेस इन्ग्रेडियंट्स कंपनीचे हे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून काम करतायत.
आणि पुन्हा आनंद वाटतोय की ते चायनामध्ये जरी हे सगळे शांघायमध्ये असले तरी हे तिघही जण भारतीय मनोवृत्तीचे आणि त्यामुळेच स्वतः अमितजी हे गरजे मराठी ही जी संघटना आहे त्याचं पण वेगवेगळ्या देशातील इंडियन्सनी एकत्र येऊन ही संघटना स्थापन केलेली आहे आणि शांघाय काम स्वतः अमितजी बघतात. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या भारतातल्या म्हणजे महाराष्ट्रातल्या कंपनीज बरोबर त्यांचं टायअप आहे आणि आणखीन एक सांगायला की आपल्या टुरिस्टना म्हणजे यंग एंटरप्रेन्युअर्सना चायनाची माहिती करून देण्यासाठी ते चायनाची टूर ऑर्गनाईज करतात. म्हणजे तुम्ही तिथे जाऊन शिकून या असं ते स्टुडंटना सांगतात. प्रद्युम्न इंगळे यांच्याबद्दल बोलायला गेलं तर त्यांचा बायोडेटा एवढा मोठा आहे की ते स्वतः रिजनल बिझनेस हेड एशिया पॅसिफिक रिजन फॉर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग अँड मेंटेनन्स अँड कन्झ्युमर अँड कन्स्ट्रक्शन ॲडिसिव्ह बिझनेसेस फॉर द हँकेल कंपनीचे काम करतात आणि खूप मोठी पोस्ट त्यांची आहे. संपूर्ण एशिया पॅसिफिक रिजनचे ते हेड आहेत. त्याच्यानंतर मी म्हणेन की ही होल्ड्स अ ग्लोबली लीडिंग मार्केट पोझिशन both in the consumer and industrial business. He has over 23 years of experience in building and leading the actually सगळ्यांनाच तयार करण्याचं काम करतात आणि त्यामुळे सक्सेसफुली बिझनेसेस टर्म्स इन इंडिया, मिडल ईस्ट, आफ्रिका, एशिया अशा तऱ्हेने त्यांचं खूप मोठं काम आहे. ते स्वतः प्रद्युम्न हे इंडस्ट्रीशी रिलेटेड आहे, एक्सपोर्टशी रिलेटेड काम करतातच आहेत, परंतु जसा अमित आणि नागपूरचा आहे तसं प्रद्युम्न हे MP मधले आहेत, आपले देवासचे ते आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी इंजिनिअरिंग पण MP मधनं केलेलं आहे आणि मार्केटिंग मॅनेजमेंट पण इंदोर मधनं केलेलं आहे. असे तिघही शांघायमध्ये एस्टॅब्लिश झालेले आपले भारतीय इंडियन आपल्याला भेटायला आज इथे आले. त्यामुळे वेलकम सर ऑन बिहाफ ऑफ MEDC अँड आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठान. तर खूपच तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. थँक्यू सो Over मच. to चैताली. नमस्कार तुम्हा तिघांना. तुम्ही तिघही शांघायमध्ये असता आणि तिथला तुमचा अनुभव लक्षात घेऊन भारतीय उद्योजकांच्या दृष्टीने आपण काही पॉइंट्सवर चर्चा करूया. त्यातून आम्हा सगळ्यांना शिकताच येईल. सो अमित सर आणि अपर्णा मॅम तुम्हाला असं विचारायला आवडेल की COVID-19 मुळे सध्या भारतात तर लॉकडाऊन आमच्याकडे सुरूच आहे, पण एशिया पॅसिफिक रिजन मध्ये सध्या खूप प्रमाणात शिथिलता आलेली आहे. तर चायना खरंच COVID-19 मधून रिकव्हर झालं आहे का? मीनताई, रवीजी, MEDC चे सगळे सदस्य, मराठा चेंबर्स, CMIA, नवीन काही भेटलेले मित्र आणि माझे काही जुने मित्र. मला आता कळलं की गिरीशजी तिथे आहेत. गिरीशजींची माझा 15-20 वर्ष जुना संबंध आहे आणि खूप छान वाटतं या सगळ्या लोकांना बघून. काही गोष्टी मी खुलासा करू इच्छितो की मी, प्रद्युम्न आणि अपर्णा हे तिघं असे व्यक्ती आहोत ज्यांना महाराष्ट्रावर आणि भारतावर प्रचंड प्रेम आहे, अभिमान आहे आणि हा प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार जो मिनलताई तुम्ही आता बोललात तो मिळाल्यानंतर एक वेगळीच जिम्मेदारी, एक वेगळीच मला असं वाटतं की देयर इज अ डिफरंट नीड फॉर ऑल ऑफ अस टू बी देअर. नवी नक्षत्रे बहुत एक परी प्यारा, मज भरत भूमीचा तारा, प्रासाद इथे भव्य परिमज भारी, आईची झोपडी प्यारी. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे हे विचार घेऊन आम्ही तिघं इथे चायनामध्ये राहणारे लोक आहोत. चायनीज सरकारकडनं आमच्यावर काही दबाव नाही आहे आणि चायनीज सरकारकडनं काही आम्हाला पारितोषिक मिळणार अशी ना आमची अपेक्षा आहे, ना उमेद आहे, ना आम्हाला गरज आहे. म्हणून त्यांच्याबद्दल काहीही उगाच चांगलं बोलायची अशी काही गरज नाहीये. जे सत्य आहे ते आम्ही तुमच्यासमोर नक्कीच मांडण्याचा प्रयत्न करू आणि त्याच्यातनं आपल्याला काय शिकता येईल, रवीजींनी जसं म्हटलं ते आपण त्याच्यातनं करू. एक खुलासा अजून की अपर्णा जी सध्या इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस मध्ये काम करत नाही. वो अभी मेरे घर और मेरे दिल को महकाने का काम करती है, पर वो अभी उन्होंने उस काम से ब्रेक लिया है. पर जो काम वो अभी कर रही है वो बहुत काबिल तारीफ है. शी इज अ prolific writer, as you most of you know.
and she's always contributing towards multiple news channels, audio visual channels, and I'm very proud of what she's doing. तो चैताली, आपने सवाल ये पूछा कि चाइना में और एशिया पैसिफिक में अभी परिस्थिति कैसी है। देखिए जनवरी 17 के 16-17 में के डेट्स में चाइना ने अनाउंस किया कि भाई कोविड यहाँ हो गया है एंड देयर वाज अ लॉकडाउन दैट वाज इम्पोज्ड, एंड अपर्णा रिमाइंडेड मी दैट इट वाज ऑन द 23rd of March कि जब चाइना ने ये अनाउंस किया, फॉर्मली अनाउंस किया कि अब हमारे पास केसेस कंट्रोल में है और वो लॉकडाउन उठाना चाहते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि 2 महीने तक द होल ऑफ चाइना वाज शट डाउन। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, कुछ लोगों में शायद ये धारणा है कि सिर्फ वुहान बंद था, सिर्फ हुबेई प्रोविंस जहां पे वुहान है वो बंद था। ऐसा नहीं है। इट स्टार्टेड इन वुहान बट वी हैव लिव्ड थ्रू द होल प्रोसेस। शंघाई पूरी तरह से बंद किया गया था, बीजिंग पूरी तरह से बंद किया गया था, ग्वांगझो बंद था। ऑल द मेजर सिटीज, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इवन विलेजेस, दे वर ऑल लॉकड डाउन। तो 2 महीने के लिए चाइना भी बंद रहा है। पर जैसे आपने कहा ये सही है, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने रिकवरी की है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फॉर महाराष्ट्र। हमारे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग होगा, इसमें से सीख जाए। अपर्णा, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? हाँ, ऍक्च्युली हे दोन्ही इतके चांगले बॅट्समन आहेत, प्रद्युम्न आणि अमित, कि आई फील कि इन दोनों के सामने मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए मुझे एक पहला चांस मिला है तो मैं इसी में बता देती हूँ जो मैंने सोच के रखा है। तो आपको पहले बार पे चौका मारना है। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा ये न्यू नॉर्मल का कंसेप्ट है कि जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज ही मेरे सामने आया और मैंने सोचा कि ये मैं आज बता सकती हूँ आप सबको। तो द थिंग इज कि आज हमारे यहाँ पे शंघाई में द फर्स्ट वर्चुअल बाजार और द फर्स्ट वर्चुअल मार्केट हैपेंड, and it is going to happen today. I mean, it happened today and it is also going to continue tomorrow. So this virtual market, this nobody knew before. So what all these vendors decided to do is they decided to make a group, and in that WeChat group, like हमारे यहाँ पे जैसा WhatsApp है, यहाँ पे चाइना में हम लोग WeChat यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम पेमेंट्स भी कर सकते हैं और जिसका एक QR कोड होता है जो हर एक का इंट्रोडक्शन होता है। तो इन लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में एक हफ्ते से अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर की अबाउट ऑल काइंड ऑफ वेंडर्स। सो देयर आर टोटल अराउंड 300 people in this group, and among those 300 people there are about 60 to 70 vendors, and these vendors are of different types. कोई फूड वेंडर है, कोई स्किन केयर का वेंडर है, कोई इवन लाइक फ्लावर्स और ये सब चीजों का भी वेंडर है, या जैसे फर्निशिंग्स है, ये सारी चीजें, कोई टूरिज्म वाले भी लोग हैं इसमें। तो इन लोगों ने ऐसा किया है कि ये ग्रुप में ये लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन जिसको पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ फूड के बारे में और जानना चाहती हूँ या मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ, तो मैं उस वेंडर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करूँ। आई विल गो थ्रू द QR कोड शेयर्ड बाय दैट वेंडर ऑन द ग्रुप चैट, and then I will scan that QR code and I will directly get in touch with that vendor. Correct. So ग्रुप में जो सेल और ये सब चीजें हैं वो ग्रुप में नहीं होगी, वो पर्सनल लेवल पे होगी, बट सब लोगों को इस ग्रुप के थ्रू इन वेंडर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आई थॉट कि दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो टू लर्न, क्योंकि मुझे याद है कि मिनल ताई के थ्रू जो उद्योगिनी ग्रुप है उनके थ्रू हर साल आई थिंक दिवाली के दरमियान एक ग्राहक पेट होता है, और जो ग्राहक पेट मैंने बहुत एंजॉय किया है जब मैं मुंबई में रहती थी। आई यूज्ड टू रियली वेट फॉर दैट और मैं वहां जाके हमेशा शॉपिंग करती थी। तो ये जो ग्राहक पेट है, हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये ग्राहक पेट नहीं कर पाएंगे इस बार, फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके की अगर हम लोग वर्चुअल ग्राहक पेट के जैसा कुछ अगर ऑलरेडी प्लान कर सकते हैं तो दैट विल बी रियली गुड, है ना? एग्जैक्टली।
मिनलताई, आय नो आपल्याला लवकर आपल्याकडे वेळ कमी आहे, पण याच्यासाठी जर का इफ यू नीड एनी हेल्प, QR codes आर नो लॉंगर व्हेरी डिफिकल्ट टू मेक इन इंडिया. देयर आर मेनी कंपनीज, but there is in China, in Shanghai, there is actually a company which is on IT enabled services, which is actually run by a fellow Indian. जर का असं हवं असेल तर मी किंवा आपण तुम्हाला डेफिनेटली त्यांना कनेक्ट करून देऊ आणि याची या अशा सगळ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची माहिती आपल्याला आरामात देता येईल इकडे. चैताली, द न्यू नॉर्मल इज देअर. सगळ्या इंडस्ट्रीज चालू नाही झाल्या आहेत. काही इंडस्ट्रीज खूप चांगल्या करता आहेत. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, ट्रॅव्हल इंडस्ट्री या इथे अजूनही ठप्प आहेत. त्यांना अजूनही वेळ लागणार आहे व्हायला. पण एक मी तुम्हाला सांगतो की इथे टुरिझम इंडस्ट्री, आणि रवीजींना याच्यात आश्चर्य वाटेल, टुरिझम इंडस्ट्री इथे उफाळून परत आली आहे वर. कारण की चायनानी जो कॉन्सेप्ट केला, दे हॅव ऍक्च्युअली कम अप विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट चायनीज गव्हर्नमेंटनी. इट इज कॉल्ड रिव्हेंज टुरिझम. तुम्हाला आम्ही 2 महिने घरी बसवलं, आता तुम्ही बाहेर जा. त्यांना इन्सेंटिव्ह दिले जात आहेत बाहेर जायला, आणि बाहेर जाऊन त्या सगळ्या टुरिस्ट स्पॉटवर जाऊन बॅनर दाखवा, आय लव्ह माय कंट्री, वी आर देअर, वी विल फाईट. दिस इज कॉल्ड रिव्हेंज टुरिझम. आणि त्याच्यामुळे आणि इन्सेंटिव्ह दिलं जात आहे लोकांना शॉप करायला, लोकांना हे करायला. सो देर इज अ डेफिनेटिव्ह वे इन विच चायना इज ट्राइंग टू इन्क्रीज पीपल स्पेंडिंग. सो दिस इज वन वे. So Chaitali, let's move to the next question. अमित सर, तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल की हाऊ द कन्झ्युमर गुड लँडस्केप लुक इन एशिया पॅसिफिक रिजन इन 2020 and 2021 and what are the key implications? अगदी हा प्रश्न रवीजींनी सांगितला होता. कॅन वी हॅव द प्रेझेंटेशन? मी काही स्लाइड्स आहेत, लोकांना आवडतील, नाहीतर नुसतं त्यांना आमचे चेहरे बघावे लागतील, विच आय थिंक इज प्रिटी बोरिंग. वी हॅव मेड सम स्लाइड्स विच आर प्रॉब्ली गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. Amit, there is a request on the chat which says that can we have the presentation in English, because many of us don't follow. I saw that. So we will try to keep in English, and I will, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं और रवि जी नागपुर के हैं. नागपुर में हिंदी आमतौर से बोली जाती है. Let's move to the next page, please. Yeah. Can we go on the full screen mode? So as ये देखिए ये चार्ट. विवेक, can we go on the full screen please? Vivek, if you do Control L, Full screen mode is activated. Control L कर, Control L. Okay, we are on the full screen. Okay. ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टडी. इसमें आपको ये दिस इज प्रोजेक्टिंग कि यहाँ पे एशिया की जो सब बड़ी इकोनॉमीज है, ये किस तरह से रिकवर होने वाली है. इसमें 2 चीजें आप देखेंगे कि अगर आप चाइना और कोरिया को छोड़ दे तो बाकी सभी इकोनॉमीज का जो रिकवरी है उसको हम यू शेप कहते हैं, एक्सटेंडेड यू शेप रिकवरी. चाइना, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट क्वार्टर, वाज डाउन बाय -10%, पर उसके बाद उनका रिकवरी हैज बीन एक्सीडिंगली हाई. कोरिया में भी ये हुआ है. सो इट्स अ वेरी सिंपल हाइपोथेसिस विद दिस चार्ट व्हिच वी कैन ऑल फाइंड आउट कि जिन कंट्रीज ने लॉकडाउन they have been able to implement the lockdown in a very strong way. Those are the countries which have been able to recover the fastest. And I must say I'm very proud to see that India में भी हमने क्योंकि लॉकडाउन इस तरह से किया है, you see that our recovery will also be is projected to be very good. और हमारी रिकवरी जरूर होगी. You can see some of the other markets like Japan and Thailand, जहां पे वो इस तरह से लॉकडाउन नहीं कर पाए हैं, they will have a big drop before they start to recover. Let's move to the next slide. अब ये चैताली ने सवाल पूछा कि फॉर कंज्यूमर्स, ग्राहकों के लिए, what is the important thing when it comes to planning the timelines. ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है आप सबके लिए. मैं प्रद्युम्न और मैंने ये बनाया था कि इसमें आप देखेंगे कि Jan-Feb में चाइना बंद था and we were all the other markets were actually still working. ग्रेजुअली ये हुआ कि मार्च और अप्रैल में मैंने जैसे आपको बताया कि अराउंड 20 मार्च के करीब चाइना स्टार्टेड बैक. चाइना ग्रेजुअली स्टार्टेड रिटर्निंग टू नॉर्मलसी
और यूएस, यूरोप, एशिया, इंडिया में प्रोडक्शन और कंजम्पशन फ्रीज हो गया है। तो अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि जून ऑनवर्ड्स यूएस में, यूरोप में, एशिया में, इंडिया में वी विल स्टार्ट द नॉर्मल एक्टिविटीज। और इसमें 2-3 assumptions ये है कि कोविड भी सीजन से अफेक्ट होगा। Seasons will definitely affect COVID, and COVID finally will also act like SARS. चाइना ने SARS को भी टैकल किया है, चाइना ने कोविड को टैकल किया है, उनका भी ये मानना है कि finally it will start to behave like that. So again, as we said, China sees a quick V shape, while as EU and US will see a more long U-shaped recovery. अब ये सब ये रिकवरी हम जो कह रहे हैं, we are all assuming कि ये वायरस doesn't resurface again in winter. There is a risk, but we hope that that doesn't happen. ये टाइमलाइन हम सबको जानना बहुत जरूरी है. Let's move to the next slide. We are coming specifically to India. इसलिए हम ये चाह रहे थे कि हम भारत के बारे में बात करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि कंज्यूमर भारत में रिकवरी जो है, इकोनॉमिक रिकवरी, कि किस तरह से होगी. And if you see very interestingly, 2019 is a very good example, a very good indication. What was the biggest thing which drove growth last year was actually consumer spending. रवि जी, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि चाइना भी कंज्यूमर स्पेंडिंग को इतना क्यों तवज्जो दे रहा है, they are exactly doing it for the same thing. Because if you see in 2020, the projected forecast is कि हमारा consumer spending सबसे कम हो जाएगा. And the only growth that we are expecting is through government spending. Now we all know that there is a limit to how much government can spend. So what we are seeing is that the key drivers for our economy are all in negative. Our investment is in negative, our consumer spending is negative, our exports are in negative. We cannot, and it is not fair for us to only expect government to keep pumping money to recover the economy. So for 2021 to be a good year for us, what is very important is that we all, and I think we are all entrepreneurs, and that's what we need to do. We need to drive consumer spending. Consumer spending is the key. जब confidence बढ़ेगा consumers का, spending बढ़ेगा, that's when we will recover. Let's move to the next slide. The next slide actually has a map of India. We all know that there is some very distinctive things in this map. ये थोड़ा सा पुराना है, ये अप्रैल का है, we know, but ये अभी भी ये थोड़ा सा इसी तरह से है. The largest number of cases are actually in places which are the जो hubs है हमारे industries के. रवि जी will agree that these are actually the hubs of our industry. Now there is a silver lining there. The silver lining is because these are hubs, these are mega cities. यहाँ पे there is a very fast way that we can put e-commerce in place. Our COVID has not affected so much our areas where, let's say in the backward areas, in the poor parts of the country. So in these places, in Pune, in Mumbai, in Nagpur, in Bangalore, in Ahmedabad, e-commerce और ये होगा ही. I can assure you, it is not something which is we are talking of the future. हम देख रहे हैं कि Jio क्या कर रहा है. We are also seeing what Facebook has done. They have launched Facebook Shop. ये अब कल की बात नहीं है, ये अभी आज की बात है. This is exactly what happens in China. This is exactly what you will see happening in India now. E-commerce will start. Second thing is कि हमारा health and hygiene. There is a faster way that these cities can improve their health and hygiene. So we can actually ensure that our response to COVID in these places where you see the maximum number of cases today, और आज हमें ऐसा लग भी नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे रिकवरी भी उतनी फास्ट होगी, इंप्रूवमेंट्स भी उतनी फास्ट होगी. Last but not the least, and I was talking to Ravi ji before this, that our agriculture industry, our agriculture sector in India has more or less been left intact. It has not yet been worstly affected. Effect तो हुआ है, but that is a silver lining for us. We are all expecting a good monsoon. We are all expecting that we will have a decent year ahead. So agriculture will actually be one of the big growth drivers for India as we recover from COVID in times to come. Let's move to the last slide. Actually, second last one. We are all entrepreneurs. No, sorry. Can you just go back?
No, just the next slide, please. Yeah. Next to this. Thank you. हम सब entrepreneurs हैं. We are all looking at this. This chart, don't get too confused. It's very simple. The one that you see on the right is all our discretionary spending. है ना, जिसको हम discretionary spending बोलते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है, सब ठीक है, तब हम इस पे खर्च करेंगे. But the one on the left is our essential spending. ये मीनल, you had told me to speak about this because we have small entrepreneurs, we have lady entrepreneurs. आप सबको जानना ये बहुत जरूरी है कि which are the sectors जो in all the madness that we are seeing right now, there are some sectors which are still growing. Groceries, definitely growing. Food deliveries, quick service restaurants are growing. Snacks are growing. There is even a small growth in apparels that we are seeing. जैसे COVID improve होगा, you will see a lot of skincare products coming into the market. In China, you will be amazed that 2 products which are becoming very big hit for this whole thing about, let's say, improvement, enhancement of immunity. Mm-hmm. Can you believe the 2 ingredients are apna adrak, ginger, and our haldi, turmeric. It's turmeric, it's ginger that people are now putting into their beverages. Ye India mein bhi hoga. People will be now more worried about immunity. People will be more worried about their health. Clean label, natural colors. You will see that happening a lot. So we have to focus on these. And of course, understand that consumer electronics, appliances, entertainment, vehicle purchases, ye disturb rahenge probably for the next 1 year. Let's quickly move to the next slide. The next slide is something which Raviji had asked me to talk about. Which are the industries which will be most affected? And Raviji put some work, or we put some thought behind this. This is for India. These are some of the industries which we feel will be, it's a very simple chart to see. Q1, Q2, Q3, Q4. Q3 and Q4 may very interestingly, consumer packaged goods, food and beverages. I don't need to talk about alcohols and spirits. We all know what's happening. But even consumer durables and restaurants and food services, they will all start to show recovery. And we need to really focus on how we can build these industries up. The 2 industries which we all know, no prizes for guessing that, residential real estate and tourism, those will of course be affected. But we need to put more impetus on these 4 or 5 things and bring our small entrepreneurs to do more on these industries, because these will see a strong growth. Last slide. There's a lovely survey, and all of you would actually be interested to. ये India में survey हुआ था. The people were business owners were asked in India, what is going to be the most urgent priority for your India business? और ये जो findings है, these findings have even impressed me and also surprised me and Pradyumna. The majority people are saying is development our sales team. And what they are meaning is that how will we train the sales team into being more e-commerce driven, more webinar proficient, being more now going online rather than offline, because सब समझ रहे हैं कि अब हमारे पास customer के पास जाके मिलने का ये कम होने वाला है. These opportunities will be less. So we have to embrace, as China has embraced, we have to embrace webinars. We have to embrace Zoom calls. We have to embrace getting into the O2O side of business. And that is what is very interesting. And then reorganization of geographical focus and states, some cities, some places, and even some products will have to be discontinued and new products will have to be brought in. I hope this was an interesting part. And let's move to the next question for Pradyumna. प्रद्युम्न सर, तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल की how the industrial look in Asia Pacific region for this year and next years, and what are the key implications for the same? Very good. So thank you, Chaitali. I think that's a very interesting question. It kind of builds on what Amit mentioned about the consumer sentiment and the consumer behavior. In the end, the industry actually goes to serve the consumers, right? So can you go, Vivek, to the next slide? I actually also a couple of slides to show which I can use while I talk. So this is the slide, yeah, you can stay on this one. So this basically shows the GDP growth forecast as of last month. So of course, there is another update to this
since the last month's forecast for all countries in the Asia Pacific region. So as Meenal Tai was so kind to mention that my responsibility is in the whole region. In fact, just earlier today, we had a discussion with all our country heads in the region, trying to understand how the situation is looking like in all countries, and each country is very different. So as Amit mentioned, in China, we see that most industries are back to normal or getting back to normal. And normal is not different. It's a new normal, right? So when we say they are normal, it means they have started production, but they are still not at 100% of the capacity where they were, except in the state-owned enterprises who are producing faster. The export-driven industries or export-oriented industries are still catching up. Even when they opened up, the small-scale industries took longer time to start. Okay? And the bigger companies, manufacturing plants, they started faster. And the reason for that was the smaller companies took longer to put in place all the measures they had to put in place. कि हमको टेम्परेचर चेक करना है, हमको एम्प्लॉयज को जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको लेकर के आना है, जो कि चाइना में बहुत है. चाइना में भी बहुत ज्यादा संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स हैं. ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रांतों से, दूसरे शहरों से बड़े शहरों में आके या बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में आके काम करते हैं, जैसे कि हमारे देश में भी हमने देखने को मिला है. तो हमारे यहाँ पे भी यही हमने देखा है कि ये अभी जो मजदूर गए हैं, जो लेबर फोर्स हमारी गांव में गई है, उनको आने में समय लगेगा. अगर हम कुछ दूसरे देश देखें तो उसमें एक रिकवरी का पैटर्न थोड़ा अलग है. So there are countries like Korea which were recovering very well, but they have a second wave now. Singapore same way. थाईलैंड या इंडोनेशिया में अभी भी काफी सीवियर सिचुएशन है. ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सोशल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है वहां पर क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है, तो उसके बावजूद भी वहां पर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है. और आप देखेंगे इस चार्ट के अंदर में कि ये दिस इज आल्सो शोइंग एग्जैक्टली इन द जीडीपी फोरकास्ट फॉर द ईयर. Like Amit said, there are countries which are expected to recover faster. You can see Vietnam, which has done very well to control the spread of coronavirus, is actually showing stronger recovery than many other countries. We see a very significant recession in Japan and in South Korea, two major economies which are heavily dependent on exports actually. तो अगर consumer demand कम है, जैसे अमित ने कहा कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कम होने वाला है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कम होने वाला है. तो ये इंडस्ट्रीज जो है वो जापान और साउथ कोरिया की इकोनॉमी को काफी ड्राइव करती हैं, उसमें इम्पैक्ट होने वाला है. थाईलैंड जो है, अगर आप उसका जीडीपी देखेंगे तो वो नेगेटिव है. उसमें एक तो इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस काफी ज्यादा है. इट्स अ मेजर हब फॉर अप्लायंसेस, इट इज अ मेजर हब फॉर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स. दूसरी तरफ टूरिज्म जो है वो उसका शेयर जीडीपी में बहुत बड़ा है. और जैसा रवि जी ने शुरू में कहा, अमित ने भी स्ट्रेस किया कि एनी इंडस्ट्री, एनी पार्ट ऑफ द मार्केट विच रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट, विच रिक्वायर्स अ टच, इज गोइंग टू बी सीवियरली अफेक्टेड. एनीथिंग वेयर वी कैन क्रिएट अ लो टच, ई कॉमर्स जहां पर हम लेके आ सकते हैं, जहां पर हम डिजिटल वे ऑफ वर्किंग लेकर के आ सकते हैं, वहां पर वो इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट कम होगा. तो टूरिज्म में इम्पैक्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा. इंडिया यहाँ पर आप देखेंगे इट शोज पॉजिटिव ग्रोथ which is primarily because of two reasons, because this chart is from Jan to December. Okay, so most of the other countries follow a financial year which is December. अगर हम अप्रैल से मार्च का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर लेंगे तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव around 4 to 5%, which is, when you compare it with many other countries, is not so bad, especially that we are looking at, from the month of April. If we take the full year, we should hopefully still be a positive. So can you go next slide, please? As I mentioned before, कि ये जो इस चार्ट में आप देखेंगे, these are the active cases, not all the cases which have happened, but the cases which ever took होने के बाद में लोग रिकवर होते गए. तो आप उसमें जो ब्लू माउंटेन देखेंगे, that is China. Basically आप देखेंगे कि towards the end of January the COVID cases started to accelerate. वो जो माउंटेन है वो it reached its peak more or less mid of February. Then it started to decline as people started to recover. All the other colors are other countries that you see on the right side, and you can see that there is a second peak which is coming up
in the whole region. So while China has declined, all other countries are yet to peak or are just peaking right now, which means that as they start to decline, there will be a recovery. But at this stage in the overall Asia Pacific region, there is going to be an impact. China will be more positive, or other countries are a little bit behind, and they will be impacted. We are in a connected world now. So what does it mean for us is that we will be impacted as well, because ऐसा नहीं होता है कि आज की सारी दुनिया में इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो और किसी कंट्री में उसका इम्पैक्ट हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. Can you go to the next slide, please? And then you can see how it looks for India specifically by quarter. Okay, so this is again, as I said, is Jan to December. So Q2, which is this quarter, will be severely impacted, right? Because it was almost end of March when we had the lockdown. This quarter there has been very limited economic activity, जो कि बहुत जरूरी भी थी. हमारे सरकार ने एक सही समय पे बहुत ही कड़े कदम उठाए जो कि बहुत जरूरी थे, और ये उसकी वजह से हमने दो चीजें की. एक तो हमने we were able to save lives. We were able to also put in place the measures which will be important as we start to open up. हमने वो सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिहेवियरल चेंज लाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, और उसकी वजह से हम देखेंगे Q3 और Q4 में we will start to see a positive impact. But for any government around the world, it is the balance between lives and livelihood, saving lives and livelihood, and that balance is very important. As you can see, the first priority for the government was to save lives in the period, and now the government is, as we are opening up, is the focus is on saving the livelihoods. Can you go next slide, please? So what will be the impact of this across even the industrial segment? So we saw from the consumer's perspective, obviously it translates into the manufacturing output. As you can see that overall manufacturing activities will continue to be disrupted in this quarter, obviously, but it will be prolonged only towards the end of Q3, early Q4 of this year. और हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो दिवाली के आसपास में हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में रिकवरी चालू होगी. Consumer staples, which are consumables, will continue to grow. Construction will be significantly disrupted. Almost all industries, in fact, automotive is one industry which was already not doing so well going into this crisis, right? We already had a negative growth for almost 6 quarters roughly, and it will continue to be under pressure. What does it mean for us? Can you go to next slide, please? So when all these industries and consumer segments are impacted, Vivek, can you go to the next slide? Vivek? Vivek, are you there? Okay. So let's see if I think we might have some technical. No, just one more slide back. Sorry, Vivek. Okay. So this slide, I just wanted to show why it is important for us to take that view, because this chart shows different industries in India and what is their contribution to the GDP. At the same time, how many people are employed by those segments. So as you can see, because multiple industries are impacted by this downturn or by the pandemic, people who are employed by those industries and people who are actually going to spend the money will also be impacted. So it's a kind of a downward spiral then, कि अगर हमारी इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं करती हैं, लोग का डिस्पोजेबल इनकम लोगों का इम्पैक्ट होता है, या डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो कम होता है, वो कम होने की वजह से डिमांड कम होता है, अगेन इम्पैक्ट्स इन द इंडस्ट्री. सो इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा अमित ने स्ट्रेस किया, कि हमारे यहाँ पे जब तक कंज्यूमर स्पेंड साइकिल में नहीं आएगा तब तक जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर में इम्पैक्ट रहेगा. कैन यू गो नेक्स्ट स्लाइड? So next slide, you see basically some key takeaways for the industries which I wanted to highlight. So transportation as a sector, okay, so especially airlines, but all kind of transportation sector is likely to be recovering very slowly, as we all can imagine. So is tourism and hospitality, right? Anything which requires contact, physical contact is going to be slow. Digital services, Raviji highlighted also, and Amit spoke about, Aparna gave a wonderful example, will continue to become more prominent and will continue to accelerate.
and I'll talk about that on in the end as well. Flexibility will be key. So सारे businesses के लिए, चाहे हम manufacturing में हो, चाहे हम service industry में हो, हम trading करते हो, हमारे लिए जरूरी कि we maintain some flexibility in our business models. So payment terms पे हमारे ऊपर pressure आएगा, but we'll need to be ready to adopt to new ways of doing business. फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा और बात करेंगे. E-commerce, as we said, will continue to become more important. Can you go to next slide, Vivek? And I just wanted to summarize that on the e-commerce point. This is the data that you see on, and there are two sides. B2B है right side में, and then you also see B2C or consumers on the left side. So the blue chart, अगर आप left side में देखेंगे, is basically shows what percentage of people or respondents were already buying digitally, and the white one shows how many new buyers have been added during the COVID period. Okay, and as you can see that there has been a significant jump in the number of people who have shifted to digital buying mode as consumers. In an economy like US, जो कि काफी advanced और mature economy है, पिछले 10 साल में जो कंज्यूमर रिटेल जो है ऑनलाइन सेल, इट मूव फ्रॉम 10% to 16%. 10 साल लगे उनको 10% ऑनलाइन रिटेल सेल होने में, 10% से 16% जाने में. अभी 16 से 27 जाने में उनको 8 हफ्ते लगे. जैसे ही वो कोरोना का इम्पैक्ट हुआ, रिटेल में रिस्ट्रिक्शंस आए, लोगों के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आए, लॉकडाउन हुआ, वैसे ही ई कॉमर्स जो है काफी तेजी से एक्सेलरेट हुआ. और ये चीज आप राइट साइड में भी देख रहे हैं कि डिजिटली एनेबल्ड सेल्स फोर्स जो है दैट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हम लोग चाइना में 2-3 एग्जांपल्स जो देख रहे हैं ऑलरेडी, इवन इन अ वेरी ट्रेडिशनली ड्रिवन इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल सेल्स ड्रिवन इंडस्ट्री लाइक रिटेल, या हम देखेंगे जो रियल एस्टेट है उसके अंदर भी डिजिटल का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है. अभी इनफैक्ट लास्ट वीक में यहाँ पर एक सेल था फॉर प्रॉपर्टी इन वांखा करके, एक बड़ा बिल्डर है. दे एक्चुअली अलाउड देयर कस्टमर्स टू हैव अ वर्चुअल रियलिटी ऑफ देयर अपार्टमेंट्स. So they could come to an office or sitting at home, they can wear a virtual headgear and actually visit different properties and see how the apartments will look from inside. So without having to actually go there. These are the innovations which will change the industry, and they will make sure that we continue to emerge out of this whole crisis much stronger. Chadal, that was my summary. I think the situation is tough, but as we always do, we'll find a way to come out stronger with new business models. थँक्यू सर. यानंतर अमित सरांकडून जाणून घ्यायला आवडेल की हाऊ डिड चायनीज कंझ्युमर कंपनीज मॅनेज टू सर्व्हाइव्ह द कोविड क्राइसिस एंड व्हाट आर द लर्निंग्स. बिल्कुल. रवि साहब जानते हैं कि मेरे वालिद, माय फादर डॉक्टर विनय वाइकर वाज अ वेल नोन एक्सपोनेंट ऑन द उर्दू लैंग्वेज. उनको एक शेर गालिब साहब का जो पसंद था वो ये है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज. रंज इज एक्सट्रीम सैडनेस. रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई. So something of this sort happened also in China. So let's go on the next slide. I don't have too many slides, but two very important slides. We have been lucky, Ravi Saab ki, me and Pradyumna, we have actually very good access with these three very big companies in China and of course worldwide. और इनके सीईओ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला. AB InBev ये दुनिया की सबसे बड़ी बियर प्रोड्यूसिंग कंपनी है. इनकी इंडिया में भी अच्छी, they have a lot of manufacturing plants in India. इन्होंने 10 या 20 या 30% ड्रॉप नहीं देखा. इन्होंने अपने बिजनेस में 90% ड्रॉप देखा when they saw that. Because just to let everybody know, चाइना में क्या है कि the beer drinking और alcohol drinking ये घर में नहीं होता है. People don't drink at home. There is the whole concept is social drinking. You must have seen or heard or read कि चाइना में round tables होते हैं at restaurants. You all go. There is no head table, and then there is this whole culture of doing gumbays and then drinking alcohol. अब ये सब बंद था और ये अभी भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है. So you can imagine that they were completely out. Their nightlife was out. Restaurants had closed. So there was so they had to quickly change the entire business model.
The first thing that they did was they went on an e-commerce platform. They also, Raviji, very interestingly, even supported by monetary, gave monetary support to their retailers and distributors just to keep them alive. कि भाई बचेंगे तभी तो लड़ेंगे. So they realized that very soon. What I want to tell all our entrepreneurs is, and because I work very closely with these guys, you'll all be amazed, Milanta, you will be amazed. या इस कंपनी ने पिछले 2 महीने में 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं चाइना में, और एक भी बियर नहीं है. They have launched basically they have launched products for e-gamers. भारत में भी ये होगा. What you realize is बच्चे जो young adults है वो घर में बैठे हुए, they are all playing games on their phones or on their laptops. There will be a big category called e-gamers. अब इनको सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीना ठीक नहीं है, या इनको सिर्फ कोक पीना ठीक नहीं है. So more healthier beverage. मैं immunity की बात कर रहा था वो. Then they have also launched immunity beverages. They have also, this will be a big segment. I'm just giving you some examples. Their CEO told me something very interesting, Meenal. तो मनाला कि Amit, in the height of the crisis, I came up with a 30-day, 70-day and a 100-day plan. मैंने कहा सर फर्क क्या था? So he says 30 days was how to survive, and 100 days was how to revive. I mean, the first 30 days, first we survived and then we revived. Lawson, ये एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है यहाँ पे. It has got 9,500 stores in China. It's huge. इन्होंने ये थोड़े रिलैक्स थे, इनको लगा नहीं कि ये पहले इतना बड़ा होगा. So they felt कि ये सिर्फ वुहान तक ही रहेगा और फिर सब निकल जाएगा. But when they realized the problem, they did something very interesting, Raviji. They actually formed their own team, क्योंकि they realized कि चाइना SARS से गुजर गया है. So there is a lot of learning that they have. They actually got these guys to say, यार सरकार का इंतजार मत करो, तुम बताओ कि अगर तुम सरकार हो तो तुम क्या करोगे. And they actually started to preempt what the government will do. And so they were actually ready in a very, very short time to be able to take care of the problems and then even come back. So they were one step ahead of the game. कि सरकार अब कौन सी चीज ओपन करेगी, हमको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे. उनके सीईओ ने बहुत अच्छी बात की जो मैंने अभी आपको की थी कि अमित, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग फर्स्ट वी हैव टू सर्वाइव. कंपनी को सर्वाइव रखने के लिए कुछ भी करना पड़े वो बहुत जरूरी है. एक बार once you go through the crisis, you always come out stronger. The last brand is something we all now know, Starbucks. कौन है जो Starbucks को नहीं जानता है, but उनकी जो CEO है, she's a lady who runs China. She said something very interesting जो entrepreneurs है वो सब एग्री करेंगे मुझसे. She said, अमित, इस बार कोई प्ले बुक नहीं था, कोई रूल बुक नहीं था. ये ऐसी चीज थी जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था, कोई अंदेशा नहीं था. So she said we actually went back to our basics. उनके उनका जो ग्लोबल सीईओ है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो उन्होंने कहा कि not every decision is an economic decision. हर चीज को पैसे के नापतोल से नहीं देखते हैं. So they went back to that. And now the new Starbucks, and this could be something very interesting. That's what me and Pradyumna and Aparna are telling you. आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि अब Starbucks में जब हम जाते हैं, अब कोई कैशियर नहीं है, कैश रजिस्टर ही नहीं है, क्योंकि आप जाके ऑर्डर ही नहीं कर सकते हो. आपको ऑर्डर करना है फोन पे. There is an app, you can order on the phone. When you go there, there is nobody who is going to collect cash from you. तो आपको या तो पहले से ऑर्डर करके रखिए, आपका डिलीवर हो जाएगा. In the height of the crisis, this company, which is very interesting, can you believe that before COVID, रवि जी 15 घंटे में ये एक स्टोर ओपन करते हैं in China. That's the pace at which they are growing in China. 15 hours, one store. And what did they do? What did they do after COVID? They closed down all their stores. They said, kuch open mat rakho. Safety first. And after they took that 2 months, they have completely redesigned their stores now. I just wanted to mention this because this will be also very important for us. लोगों में डर है, and वो कंपनी, वो एंटरप्रेन्योर्स, इवन इफ यू आर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, हर चीज में सोचिए कि हम चीज को अच्छा कैसे करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, कोई अगर फूड डिलीवरी में है, तो आप जब फूड बनाते हैं, जो पैकेट में आप डालेंगे, उसके ऊपर एक छोटा स्टिकर अगर आप लिखेंगे जिसपे जो बंदा कैरी कर रहा है उसका नाम और उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, that one small thing from you will make a huge difference into
when the person is taking that. If you can advertise कि आपका अगर कैफे है या आपका रेस्टोरेंट है या आपने क्या क्या वो चीजें की है. अपर्णा was giving me a very good example. अपर्णा आपको इसका बता रहे थे मुझे कि पेपर डिस्पोजेबल. तो काफी बार कैसे होता है ना कि हम लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे हर टेबल पे कपड़ा डाला होता है, स्प्रेड किया होता है, या कभी कभी प्लास्टिक की शीट भी होती है. तो अदर देन यूजिंग प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक कैन ऑल्सो क्रिएट पोल्यूशन, अगर हम लोग डिस्पोजेबल पेपर्स यहाँ पे यूज करेंगे तो दैट विल बी रियली गुड चेंज. और वो आप निकाल के एक्चुअली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या पेपर को तो रिसाइकल भी किया जा सकता है इन अ पॉजिटिव वे. तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हमने इम्प्लीमेंट की, या जैसे डिस्पोजेबल कप्स हैं, फैशनेबल कप्स, इवन बड़े रेस्टोरेंट्स में भी अब देयर विल बी प्रॉब्ली अ फैशन टू स्टार्ट यूजिंग वेरी फैंसी but paper cups, very fancier cups, but probably paper cups. Another thing, if there are any doctors या आपके अगर डॉक्टर फ्रेंड्स है तो उनको एक हमारा बताइए. वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप सबको याद होगा जब भी हम आज भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं इंडिया में, मैं तो डॉक्टर खानदान से ही हूँ, तो एक रबर की ये होती है टेबल पे, है ना, ऑरेंज कलर का ग्रीन कलर का रबर, या फिर कपड़ा होता है या रेक्सिन होता है. दैट विल चेंज. चाइना, एवरीबडी इज नाउ यूजिंग दैट सेम डिस्पोजेबल पेपर. वो पेशेंट जैसे ही उससे उठता है, पेशेंट के सामने वो पेपर को लिया जाता है एंड द डॉक्टर थ्रोज इट जस्ट टू अश्योर द नेक्स्ट पेशेंट कि भैया यहाँ पे जो लेटा हुआ था उसका वही कपड़ा आप या फिर वही रबर नहीं यूज कर रहे हैं. सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स. लेट्स लुक एट दीज, हाउ कैन वी क्रिएट लो कॉस्ट रिसाइक्लेबल पेपर्स. राइट, क्योंकि ये काफी छोटे छोटे जो क्लिनिक्स हैं उन लोगों को भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके सामने है कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरीके से हम इसे सेफ बनाएंगे अपने छोटे क्लिनिक को. तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जिसमें कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर्स को मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग सिंपल डिस्पोजेबल पेपर्स. Even if you have a small store or a big store, what we need to do is we need to ensure that we all start to advertise कि हमारा स्टोर, हमारा बिजनेस, मेरा छोटा सा दुकान, मेरा घर का बिजनेस, मैं how am I COVID safe? रवि जी एंड मीनल जी, आई विल मेक अ प्रेडिक्शन कि जैसे हमारे पास ISO है वैसा देयर विल सून बी अ कोविड सर्टिफाइंग बॉडी that will start certifying businesses to be COVID safe. But then why don't we already start thinking about that? छोटे से छोटा दुकान है, छोटा से छोटा मेरा गृह उद्योग भी है. उस गृह उद्योग को मैं how can I start promoting proactively to not only customers but even to the common people? How am I? All my people are wearing gloves. Everybody उनका टेम्परेचर रोज चेक किया जा रहा है. How is low touch? No touch नहीं होगा but low touch होगा. How am I producing low touch equipment? Last but not the least, अब ये झगड़ा फाइनली हमने इंडिया में बंद करना चाहिए कि ये ई रिवोल्यूशन, मोबाइल फोन्स, ये फैड है. Let's go to the next slide. This is my last slide and this is going to, सबको बड़ा ताज्जुब होगा इस स्लाइड देख के, होपफुली. ये है opportunities to go digital in India, in Asia. Can you believe that I fell off this chair when I saw that India में there are 9 out of 10 people are using, mobile purchases कर रहे हैं. 60 is the number in India. We are even ahead already of places like Singapore in terms of the usage of internet, people using mobile phone to make purchases. Computer नहीं, mobile phone use किया जा रहा है to make purchases. India has already made this change. Therefore, big companies like Jio are investing and foreign companies are investing so much into them. और ये सिर्फ Jio नहीं है. We all need to understand the play is going to be कि मैं Jio पे अगर मैं 5 किलो शक्कर भी ऑर्डर करता हूँ तो मेरे बगल का ही जो ग्रोसरी स्टोर है वहीं से मुझे डिलीवर होने वाली है. बट थिंक अबाउट इट, बिकॉज ऑफ दिस बड़े और छोटे का अब ये खत्म हो गया. अब आप अगर छोटे से छोटे भी बिजनेस है, यू कैन एडवर्टाइज ऑन Jio, यू कैन प्रमोट ऑन Jio, यू कैन प्रमोट ऑन फेसबुक. अपने फेसबुक पेज को अच्छा कीजिए. This is a revolution which will probably come only once in a lifetime, which will give big guys a chance to become small if they don't act, and small guys to become big. So I can only encourage everyone to take that chance. Thank you so much. Very well. Last question.
येस, क्वेश्चन आहे प्रद्युम्न सरांसाठी की लॉकडाऊन संपल्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स किंवा एकंदरीत उद्योजकांनी कुठल्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉलो केल्या पाहिजे? Sure. So, Vivek, can you go to the next slide? I just wanted to use my own example here कि जो चीजें हमने की हैं खुद ने मैंने implement की हैं, and I wanted to share those with you. So this slide is very close to my heart because this I actually put together for my team in my first webinar during the Corona impact for my Asia Pacific team. So and I remember the date also because it was 14th of February. So Valentine's Day के दिन हमने ये webinar किया था और सारी टीम को साथ में लेके और बात की थी. And we said here, apart from all the business priorities that we have in terms of delivering the numbers and making sure that we hit our KPIs and so on, gain market share, improve our profits, this is a new situation for all of us. And we said there are three most important priorities for us at this stage. Number one is safety. Okay? और उसमें हमने जानबूझ के वो एक फोटो आप देख रहे होंगे हमने वो यूज किया जो एयरलाइंस में हमको सेफ्टी कार्ड में जो हम जनरली देखते नहीं है सीट पॉकेट में रखा होता है वो हमने एक कार्ड का इमेज लिया जिसमें सबसे पहली चीज हमने हाईलाइट की दैट वी नीड टू बी सेफ. अगर आप सुरक्षित हैं तो जग सुरक्षित है. तो आई एम कोटिंग समवन एज यू कैन इमेजिन, आप सुरक्षित तो जग सुरक्षित. तो वो हमने कहा कि एवरीवन नीड्स टू मेक श्योर दैट we keep ourselves safe, our employees safe, our partners, our customers safe, because that is extremely important. The second part we said is extremely important for us to maintain the business continuity. So जैसे plants खुलने चालू होंगे, safety को रखते हुए हमने business continuity कैसे maintain की जाए, अपने operation supply chain कैसे चालू किया जाए. In China, even though the lockdown started end of January, towards the mid of February, the plants were allowed to open in some provinces. And we have plants around the country, and then we have plants around the region. We actually established some best practices on opening the plants. So जब हम plant खोलना चालू किया, तो हमने हर plant में some basic precautions हमने establish किए, guidelines establish की, और वो guidelines को हमने we made sure कि we are consistent with the government guidelines. Okay? That is extremely important to understand what the government regulations are. क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी था किसी भी प्लांट में अगर एक आदमी को भी अगर इन्फेक्शन होता है then the entire anyone who has been in contact with that person would need to be quarantined. So it was extremely important for us to make sure that we create small teams inside the plant, and I'll talk about that on the next slide a little bit in more detail. कि हम छोटी टीम्स बनाएं, हम कोशिश ये करें कि वो टीम आपस में उन टीम्स के बीच में जितना कम इंटरेक्शन हम रख सकें, फिजिकल कांटेक्ट जितना कम कर सकें, वो कम करें ताकि रिस्क कम हो. अगर किसी को भगवान न करे प्लांट के अंदर या प्लांट के बाहर इन्फेक्शन उसको होता है, then we are able to move that small part of the team out without having to disrupt the whole operation. That for us was a critical thing. And I can tell you that we have been, touch wood, very successful so far across the region in 12 countries around the region where we have our plants. We have thousands of plant workers in those plants. We don't have a single infection so far. So we have been extremely successful, and was that we were very diligent when we are implementing this. While we are doing this, we also said continue to make sure that we are looking for the new normal and looking for new opportunities to do the business, to run the operations, and continue to leverage on those. Can you go to the next slide? As I mentioned before, this is all about low touch. This virus is a little bit different from other viruses. I mean, all of us contact with so many viruses. Some of them are not as harmful. Some are extremely harmful. This one is extremely dangerous because it is very contagious. ये बहुत तेजी से फैलता है, और वो फैलता किस तरीके से, अगर हम एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो उसके लिए हमने जो 4-step approach लिया is, number one, we said we have to identify those areas where there is a possibility of interaction. We gave some very good example of Starbucks, which is very easy for us to visualize. कि कहाँ पर interaction होता है. पहली चीज, आप कॉफी शॉप में जाते हैं तो आप दरवाजा खोलते हैं. Can you make that door
open on its own. आप अंदर जाते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आप कैशियर को पैसा देते हैं. कैन यू मेक दैट थिंग कॉन्टैक्टलेस, कि आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, आप स्कैनिंग मशीन से पेमेंट कर सकते हैं. एक बार ऑर्डर लेने के बाद में आप जाते हैं अपना कॉफी लेके और बाहर जाते हैं. कैन यू across that whole value chain, how to reduce the number of interactions where you have to go through physical contact? And the same approach needs to be taken by the manufacturing units as well, right? Once you have done that, you need to identify where there could be a risk and how do we prioritize those, and how we can then come up with new solutions to reduce that risk. Can you go on next slide? And I'll just show with a couple of examples on the next couple of slides. Then we can take go to the next slide, please. एक और स्लाइड आगे चले जाइए. So this gives you an example how in a manufacturing line, in an assembly line, also that is possible, and companies have done that they have created sections. So on the right side, you can see that they have created sections to reduce and minimize the physical interaction and contact between different team members. In our own plants, even in our own office, even though now it has been 2 months since the lockdown has been removed, we still see that every employee who is coming inside the plant or coming in the office, उसका temperature check होता है, मास्क पहन के ही आना होता है उसको, और वो मास्क जो है वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए. सो इन केस ही स्नीजेस, even if he is asymptomatic, usko symptoms nahi hai, he is not passing it on to somebody else. We have every 200 meters, we have a sanitizer station, so where people can sanitize their hands, and this also builds into the habit of people. जब लोग इतनी बार-बार sanitize करते हैं, it becomes a habit that because it's a behavioral change. As you can see on the top of the screen, we also tried to bring in more ways how we can remove that distance. So आप देख रहे हैं कि वो कैंटीन जो है उसमें लोग क्लासरूम स्टाइल में बैठे हैं. जनरली हम लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं. हमने उसको क्लासरूम स्टाइल में इसलिए कन्वर्ट किया कि अगेन इट reduces the possibility of transfer of infection amongst the people. Next slide, please. So the whole idea is कि हम कैसे interactions को minimize करें, कैसे हम ये examples आपने पहले देखे वो ऑफिस के थे, लेकिन यही चीजें जो हैं हम फील्ड में जब हमारे सेल्स की टीम जाती है, we should do the same thing. Each one of our salesperson who is now able to go to the field and visit customers is given a PPE kit. He travels safely. He makes sure that he has a pre-appointment and pre-alignment with the customer and makes that distance. But I can also tell you, when I was talking about the new growth opportunities, we see a significant increase in the number of digital activities, digital selling activity. Ours is a B2B business. We are the world's largest manufacturer of adhesives, and our adhesives are used in all industries, right from aerospace to making appliances, to cars, to making phones, and even bonding the shoes. And we made sure that all our sales teams are able to reach out to and connect with our customers, our partners digitally. Okay. जैसे हम आज बात कर रहे हैं इतने लोगों से, ये डिजिटल का यूसेज जो है, customers are also much more welcoming because they see a benefit. They don't have to go create a risk for their members. Wherever possible, they can interact digitally with us. So digital का एक यूसेज बहुत हमारे यहाँ पे हमने देखा कि वो बढ़ा. Can you go to the next slide? And this is the final slide, that we need to be proactive. We need to make sure that we are able to manage. जब भी हम, if there is an opportunity for work from home, we do that. Wherever there is an opportunity to work digitally, we do that. Where there is an opportunity for us that we, even at the work, when we have to work together, we create that distance, we do that as well. I think that flexibility, that proactiveness is extremely important as we start to open up. The use of technology is extremely important, and I think there are more and more technologies available, right from वो physical register से जाके already tokens पे था, पर उसमें भी touch करना होता था. उससे अभी face recognition based technologies are which are extremely getting more and more economical, क्योंकि उसका demand बढ़ रहा है, scale बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजों को implement करके we can make sure that we have safe working environment for our employees and our customers. We have
we maintain the business continuity, and at the same time, we look for new opportunities to grow our business with all the examples that we heard from Amit and Raviji earlier. All right, Chaitali, that's all I had, and we can take some questions at this stage. Sure. Dr. Prakash Singh asked the question, what are the new factors affecting industrial consumer buying behavior post-COVID in catastrophic event and how to deal with it? Right. Very good question. Amit, you want to start or you want me to start? I think that you have already probably answered that question, but is there anything more that you would like to add to it? So I think the question was more related to industrial buying, and maybe I can elaborate a little bit more on how the digital selling is getting extremely important. What are the different ways in which we are doing, and it might be useful for people on the webinar today. So we have identified there are 3 different ways in which we can interact with the customers. Okay, so one we said is, and in a B2B environment, one we said is a webinar like what we are doing today, where we are able to reach out to a large number of customers at one time, and we see this as a tremendous opportunity, which typically in a physical interaction is a barrier that of how many people you can reach at one time. So that is one way doing webinars. Secondly, we are seeing that many customers we are able to interact with individually. We are able to customize those sessions, our selling sessions, almost like doing a normal sales call. But even we are able to do this multi-site at the same time. So हम लोग customer के यहाँ पे जाते हैं, they might have a manufacturing plant, they might have a design team sitting anywhere, and our salesperson is able to interact. And the third is we are able to even do some design conversations with them or technical conversations with them, using technology, again, exchange the files, look at the whiteboards, draw pictures, show videos from both sides, or look at parts physically, also almost like in a real world. And we actually are able to see some advantages over there. So I'll give you one example. We were at one of the large electric motor manufacturers here in China, and they are trying to use a new process to manufacture. And they said that we heard that in Japan, they are using a new process. So can you tell us? We're able to dial in our Japanese technical expert from there and patch him into the video call and connect all of them together very quickly. And in the traditional world, it would take time. The customer भी पहले बोलता था कि आप उसको बुला के लाओ, फिर वो सेमिनार उसका अरेंज करेंगे, उसका वीजा होगा, उसका ट्रैवल होगा. अभी customers are also getting more used to and more receptive to digital ways of working. So to answer your question, digital is one big change we will see in the B2B world. We will e-commerce से लेके how we operate the business throughout the value chain will become more and more digital and more low touch. I'd like to ask one question here. What I asked earlier also, hearing here, is it really true that MNCs are trying to shift their manufacturing bases out of China? Amit, you want to go? कवि जी, ये सवाल हमसे, you can imagine, ये सवाल मुझसे और प्रद्युम्न जी से बहुत बार पूछा गया है. And we have obviously done quite a bit of work and tried to find out. Now, this is what is happening. This is what is happening actually. Hello, can you hear me? Look, China is still one of the largest economies in the world. It's the second largest economy. And also China is obviously doing all that it can to keep the MNCs back here in China. So just to give you one example, Raviji, which is very interesting for us to also understand how proactive it is. या आपने सुना होगा कि US-China trade war and how it is affecting not only Chinese companies but also MNC companies. China is actually now going back to all these companies and saying that we will offset you for the cost that you had to bear
on account of the higher tariffs that you have to pay to US. But one thing, Raviji, which we feel which is happening, and we have to capitalize on that, there is definitely a rebalancing happening. So what we feel is that no MNC company is leaving China. But earlier it was China only, and now it is China plus one option. So China plus one is a very, very important thing for us to remember. So because ये बहुत से MNC companies की branches already India में है. So the only thing we probably need to focus on to go into these MNC companies, even to Maharashtra, and say, under what situation can we support you to, for example, expand your existing capacity? अगर आप 100 है तो उसको 200 कैसे बना सकते हैं? Can you put in more lines? Can you put in more equipment? Can you expand your production capacities? This is something which is equally important as to try to see how to bring new companies. नई companies तो आएंगी ही, but the existing companies, existing MNC companies, I definitely see them wanting to expand their base in India. Pradyumna, would you like to add something? Yeah, absolutely. So let me add to it, Raviji. So as Amit said, the move of companies from China to other countries, okay, is a continuous process. It is already happening as China is also seeing that the manufacturing costs, the labor costs are going up in China. So many of the industries have moved already to Vietnam in last 5 years. They have moved to other lower cost countries in last few years. So that is happening. And in many cases, China also wants to move away from some of these industries because they are no longer competitive in those industries. Chemical industry, which I come from, is also an example. Over last 2-3 years, China has put very strict environmental regulations, and they are reinforcing those regulations much stricter, in many cases stronger than Europe, which used to be kind of a benchmark when it comes to environmental regulations, which is increasing again the cost of manufacturing in China. It creates an opportunity for all economies, including India. I think the advantage that we have in India versus many other lower cost economies, like or lower wage economies like Vietnam, for example, that we also have an internal demand. A company which comes and sets up a unit in Vietnam can benefit from the lower cost, but it still has to depend only on exports because the internal demand for Vietnam is still smaller compared to China or India. A company which comes to India can not only manufacture and benefit from our low cost, low wage economy, but also we have a massive demand potential. हमारे खुद के ही इतना बड़ा पॉपुलेशन है, हम और वो पॉपुलेशन इतना बड़ा है और उसमें काफी लोग अभी मिडिल क्लास में एंटर होने हैं और काफी बड़ा मिडिल क्लास ऑलरेडी है जो एफ्लुएंट क्लास में, तो ऐसी चीजों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे बढ़ने ही वाला है. Just to add to, I wanted to add another number to it. आज चाइना का जो exports है, global export is $2.5 trillion a year. $2.5 trillion export है. इंडिया का जो export है वो 320 billion के आसपास है. So we are talking about a 9 times export. Even if we are able to get, because of China plus one strategy, or every country would want to have more than one option now. सिर्फ China plus one है या नए मार्केट में उनको जाना है for multiple reasons. एक वो political social distancing तो हो ही रहा है काफी countries में, लेकिन उसके अलावा cost जो increase हो रहा है या दूसरे reason की वजह से ये हम देखेंगे कि if we are able to bring those companies to India, we will significantly benefit. और वो opportunity कितना बड़ा है सोचिए, 2.5 ट्रिलियन है चाइना, उसमें से अगर हम एक छोटा सा शेयर भी लेते हैं, it has the potential to double our export economy, right? और वो export economy हमारे इंडिया में manufacturing jobs कितने create करेगी वो सोचिए. But one thing which I'll finally say and conclude, it's not a given, it's not automatic. There are many countries in the world who are waiting to capture this opportunity when it happens, when the companies start to globalize their production. From a one country dependence, they start to expand their production footprint around the world. So we need to be ready. We need to be proactive. We need to make sure that we have the right infrastructure, we have the right policy framework,
We have the right setup, single point contact and single window to welcome these companies and do it, which is what we see is happening now. We are so happy we are seeing it from here, and we read and we feel so proud when we interact with our colleagues from other countries. जब मैं बात करता हूँ उनसे, मेरा CFO जो है वो, he's a German, he was telling me how the central government in India has taken the opportunity कि वो जो states को aid जा रहा है, that is linked directly to the economic reforms. तो ये बहुत अच्छे steps हैं. We need to continue on that path because that will create a वो हवाई जहाज जाने के लिए एयरपोर्ट चाहिए, वो हमको बनाना पड़ेगा, बेस अभी बनाना पड़ेगा, लैंडिंग स्ट्रिप बनाना पड़ेगा. Thank you. Thank you. Chaitali, more questions? But Chaitali, we need to also, we are of course mindful of the time, so we really don't want to take a lot of your time. येस, सो अजून थोडे क्वेश्चन्स आहेत, आपण एक दोन क्वेश्चन्स घेऊया आणि देन विल कंटिन्यू. Okay. What about sales based on schemes, especially in seasonal business? असा एक क्वेश्चन आहे. Sorry, can you please repeat? What about sales based on schemes, especially in seasonal business? On skills, sorry, I was not able to read that. Yeah, निशा सोनारे. आणि विवेक सर, एक रिक्वेस्ट होती, गिरीश चितळे सरांना तुम्ही अनम्यूट करू शकता प्लीज, त्यांनी हँड रेज केलाय. विवेक सर, तुम्हाला ऐकू येतंय? प्लीज गिरीश चितळे सरांना अनम्यूट करू शकता? Okay. May I know to whom I should unmute? गिरीश चितळे, त्यांनी हँड रेज केलं आहे. Girish Chitali is now on mute. Hello, Girish ji. Hello, Girish ji. Mute. You can speak now directly. I think seems to be a technical problem there. I also see he's unmuted. Okay. Chaitali, let's move to the next question. And what I'll do is, मला ते तुझा शब्द कळला नाही, I will definitely revert back on an email to this person. शुअर, मी याचे स्क्रीनशॉट देईन. सो हे जे क्वेश्चन्स आलेले आहेत ते आपण रिवर्ट बॅक ईमेल द्वारे करू. Sure. मेनी पीपल आर आस्किंग की याचं युट्यूब लिंक तुम्हाला मिळेल आजच्या सेशनचं. Okay. तुम्ही तिथेही हे सेशन रेफर करू शकता. सो आता मोस्टली कोणाचे क्वेश्चन्स नाही आहेत. आपण सेशनच्या शेवटी येऊया. आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठानच्या ट्रस्टी आहेत मधुरा मोहाडीकर अंतानी. त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स. In the meantime, I just wanted to let you know that me and Pradyumna will answer all these questions. We will take notes and we will answer all these questions and send them over to each one of them. Just check. Mudra is there? She's there only. She's online. Can I the minute winner close it? Yes, yes. रवि जी, ये हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में है, तो हमें किसी थैंक यू की जरूरत नहीं है. We really don't need that with you and with मीनल ताई. हम हमारे घर में ऐसा लग रहा है, और महाराष्ट्र के बारे में, तो प्लीज डोंट थैंक अस. I actually, me and Pradyumna